Assalamu alaikum students, I hope that you all are fine. Students, in the very first video we have discussed about all the concepts related to exercise 2.5. In those concepts we have discussed about complex number, what are complex number, what are real numbers, how to take the basic conjugate, how to take the conjugate of complex number. We have discussed about imaginary part, we have discussed about iota as well, and we have also discussed about the values, as iota square is equal to -1 and simple iota would be equal to under root of -1. So moving towards, or in the second video, what we have done in the second video, we have solved exercise 2.5 question number 2, 1, 2 and 3. Now in this video, in current video, we are going to discuss about exercise 2.5 question number 4. Here you can see now we have to do question number 4. Your question is find the value of x and y. We need to find the value of x and y from this equation. Here we have x plus iota y plus 1, that is equal to 4 minus 3 iota. What would be the very first step to solve this question? What we have to do, we need to find the value of x and y. उसमें सबसे पहले स्टेप जो हमने करना है वो ये कि हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को सेपरेट कर लेना है. उसके बाद आपका रियल पार्ट वुड बी इक्वल टू रियल पार्ट एंड योर इमेजिनरी पार्ट वुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास x प्लस आई वाई प्लस 1 है. हम इसको यूँ लिख सकते हैं लाइक x प्लस 1 in bracket, then plus we have iota y, or on your right hand side you can see we have 4 minus 3 iota. Here the real part and imaginary part are already separated कि ये आपके पास real part है और ये minus 3 iota basically आपके पास imaginary part है. So once you have separated the imaginary and real parts, फिर उसके बाद आपने ये करना है कि उनको एक दूसरे के equal कर देना है. So this is your imaginary part. This imaginary part would be equal to this imaginary part because we have an equal sign in between. Iota y is equal to minus 3 iota. So when iota will come here, it will be divided. When it will be divided, your iota will be cancelled with iota. तो ये आपके पास remaining y रह जाएगा. Y would be equal to minus 3. This is basically y equal to minus 3 iota. आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आयोटा और ये आयोटा आपका कैंसिल हो जाएगा. सो योर आंसर वुड बी y इज इक्वल टू -3. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट रियल पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो रियल पार्ट है दैट इज़ बेसिकली x प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास रियल पार्ट है दैट इज़ इक्वल टू 4. तो वी कैन राइट एज x प्लस 1 जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड रियल पार्ट एंड दैट इज़ 4. अब यहाँ पे हमारे पास 1 ऐड हो रहा है एज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x वुड बी इक्वल टू 4, ये प्लस हो रहा है, व्हेन इट विल बी शिफ्टेड टू राइट द साइन विल बी चेंज्ड, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1. सो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड द वैल्यू ऑफ x. सो एट द एंड the value of x is equal to 3 and your value of y is equal to -3. So in this question we have seen that how to find the value of x and value of y. So student, if you feel any question in this exercise, in exercise 2.5, then you can ask me. This would be your homework as well, that you have to complete your copies till exercise 2.5. In the previous lecture we discussed about the law of exponents and we did the practical implementation of exercise 2.4, the implementation of law of exponents in exercise 2.4. So your previous homework was you had to complete your copies till 2.4, and now you have to complete your copies till 2.5 as we are done with exercise 2.5. So class, your next lecture will be on Tuesday. On Tuesday we will be discussing about exercise 2.6, और हम उसमें 2.6 में हमारे पास multiple questions हैं, उनमें से we will try to solve question number 1, 2 and 3 in the next lecture. So students, till that, complete your copies and stay home, stay safe. We will see in the next lecture. Till that, everybody take care. Allah Hafiz.